Okay, so ma'am, now let's bend this conversation towards art and music. So, besides being all of this in your life, you have also been an art aspirant or a music enthusiast, right? And being a student of Kumar Gandharva, that's a completely different experience. Like, I can barely imagine, but you have experienced it in your life. So, I have two questions for you. First, what was the experience of learning music, learning that art from someone like Kumarji? And second, what change does art or music makes in one's life? Like क्या सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, क्या लाइफ का परसेप्शन चेंज हो जाता है, एटीट्यूड में चेंज आता है, बिकॉज everyone loves music, everyone listens to music, but understanding an art, going into its depth or living it is different. So does that experience change an attitude or some perception? What's that? Art itself is something which is very natural, very harmonious, and very, very ongoing in a person. Not in a person, in a life. If you have heard about it, more नाचने लग जाते हैं, हिरन सुनने लग जाते हैं. So it's a part of life, and it definitely brings stability. It definitely brings joy in you. So same thing happened with me also, that I was always inclined to singing, and then my parents were very much to listen to Dr. Kumar Gandharva, and I was only their child. That's all. But when I started going there, and it's also a story how I started going there, because he was living there since long. 48 से रह रहे थे वहाँ पे. I felt like going to him only after an incident. Okay. And that incident was that I was in perhaps 10th, and higher secondary had just started, so we had to do 11th also there. So in 10th we had some competition, and there Bhanumati Komkali, his wife, she was called as judge. Okay. I sang one bhajan abhang, and I was given second number. First was somebody who really sang well, but I was given second. And 2 days after, Mrs. Bhanumati Kumkali came to my mom's house. That is, she was their friend. They were friends because she was also in teaching, and my mom also was a teacher Okay. in same school. So they were friends. So she came and just spoke like that. Why don't you send Nandini to our school? They Music had school. started a music school, Kumar Sangeet Academy, in 58. My parents were in heaven at that time when she asked this, because even they did not feel and expect that such a good school their daughter would get to learn from. And my mom asked me to go. Nobody escorted me. I just reached their house. And my lessons started, 2, 3 lessons from somebody else in their academy. Then Mrs. Bhanumati ji, she taught me, and very soon she was expecting, and so a month or little after that, she expired, unfortunately. And then my father went to them, and he was also shattered, because maybe Mrs. Gandharva was 32 and he was 30, and alone in the whole family, 2 children with them. So my parents thought that after some time we will send her. तो उनका मैसेज आया कुमार जी का, नंदिनी क्यों नहीं आ रही है क्लास में. So my father was taken aback a little, because they were thinking that it's not fair to send it so soon. In the evening I reached, 4 o'clock or 4:30 was used to be our class. He was in his room sitting, I was in front of him. मुझे तो उस समय अंदाज भी नहीं था कि मैं किसके सामने शिष्या बन के बैठी हूँ, नहीं अंदाज था. But only thing was, all joy was within me, because I had heard his
Baitaks in the All India Radio, because he had just started singing 5 years before after his illness. So when when I started learning from him, 5, 6 lessons, and then he had to go to his programs had started. So in between, whenever he used to come, I get a message. We used to go. Not very many people or students were there. So he was sitting. I am sitting opposite to each other. He is teaching. I am singing. It went on for some time, but during that some time only, I still remember the shivers I used to get. The goosebumps used to be continuously on my whole body because I was listening to something which was too deep for me. So deep and it affected me a lot. कुछ भी हो जाता तो भी वही दिमाग में रहता 2400 घंटे जैसे आप कह लो. So he taught me, and then I started learning from him. 2 years, 1 year after he got married to Vasundhara Kumkali, she came in the new house. Kumarji introduced us to her. She was also a renowned singer of her own time. And that day onwards, whenever Kumarji was not there, basically we started learning from her, Vasutai. We used to call her Vasutai. Vasutai also was a great, great singer. Before her marriage, she was more known as herself than the wife of a great singer. So we started singing, and this is the way I started with them, very casually, very informally. I had no hesitation in that house. I could reach their kitchen, I could take anything from the table, I could talk anything to this great singer of the country, and I never felt any hesitation in anything. So informal it was. Singing about bhajans, because he already was very famous for singing Kabir's bhajans. Also, he had been exploring more on the folklore of Malwa, Malvi Lokgeet. That all we had known before I came to his music school. It went on, and when Vasundharatai started teaching me, giving me lessons, it was more towards classical, more towards pure classical. She introduced me to more ragas, more variations, more kind of what are alaps or tan or bada khyal, chota khyal, tarana, everything. So more classical based. You asked me about Kumarji's effect on me. Impact, yes. Impact. He, not only in music, but he impacted me wholly. Wholly in the sense, my literary, whatever I was feeling towards literature, poetry, lyrics, whatever in the lyrics was there, the content of the lyrics and the philosophy behind the lyrics and the Kabir behind the lyrics, that impacted me so much. Because his Kabir lyrics were very unusual. You would not find them so popular then. Nowadays, everybody is copying what he sang. So many singers are copying maybe same tune or maybe a little different tune. But it was more of a folk thing, which in the villages somebody is singing, in the folklore somebody is singing, but it was not a part of classical music. He gave Malwa Geet classical touch. He originated his Kabir bhajans and Malvi Lokgeet from classical music. He gave good sur tal combination to them as per the lyric was telling, as the philosophy in this lyric was telling. So this is what impacted me more. And I never was, and I'm not at all now, a stage singer.
So long I learned from him and from Vasutai. But fortunately, unfortunately, maybe I didn't try enough, maybe it was not for me. I never had many stage performances. But the music, but the art, but the wholehearted harmony in life that his music gave in me, he instilled in me. And I think I was more enthusiastic about these things, the literary part of it, the spiritual part of it, and the content part of it. Maybe I was more impressed by that. And then when I learned those the bhajans or the ragas or the छोटा ख्याल बड़ा ख्याल जो भी गाया उसमें उस चीज को मैं ढूंढती रही. My voice is very heavy. It was heavy there then also. It won't be like मधुर आवाज जिसको कहते हैं. It was straight, but it was perfect at that time. Never had any variation in my sa or ga or ma. No, it would hit the target. So it was there at that. But I was more attracted towards his spirituality and the kind of warmth in his singing. Warmth in the sense the effect was warm. What was his aura like, being around him and learning from him? Aura means you would not for a second or a fraction of a second also be away from him. I would not. I would straight look into his eyes. I don't know how I did that. Because looking at such a great personality and such a great artist into the eyes and then learning, it's not a joke, but it was just like that for me. And I was spiritually very much, it impacted me in there. When he sang Magan Hua Ji, I could understand that Magan. I could get that Magan into me. The Magan is like a local word. Magna is a proper literary word. But it is Magan Hua Ji. Because in that Magana, perhaps there is a link from outside to inside. And in what did you get Magan? Dhun sunke. The dhun that is going all around in the cosmos and which you have caught it into your vocal cords. That was something that got connected. And then I used to feel something like that. When he would sing Mira Savra Re, Mara Savra Re, Mari Preet Nibhajo Ji. It was not a preet of an ordinary kind. It was Mira's preet towards the Bansriwala. And not now, I'm analyzing now, but the feel is from that day. The feel of this song, Savrare Mari Preetani Bhajoji, the feel of that lyric, along with the tune that he gave, along with the sur and tal that he would give, from one line to another, he would connect. Everything started there. Everything was confirmed there. I'm just taking it forward. I'm able by maturity of age or some experience, I'm able to tell you all those things. But the feeling part of it, it was then there. Learning from him the perfect kind of sur. Just कहते हैं ना, सुर लगाना. It was not like Saregama Padanisa, but still it was Saregama Padanisa. You have 7 swar, 5 of them they have komal, 1 of them is tivra, so like that 12 of them. 12 of them created such a world of music, Eastern, Western, everything. Anywhere you go to music world, you will have these. Somebody is sharp, somebody is flat, somebody is like komal jisko bolte hain. In that also the variation. Just say if I started singing Rishabh Komal,
मारवा का ऋषभ कोमल, भैरव का पूर्वी का, बसंत का, अहिर भैरव का. Anywhere you go, you take 50 ragas like that with Rishabh Komal. Every rag has a different Rishabh Komal. And that he made us understand by singing. He's teaching, just think, he's teaching me Bhairav. He would show me how Bhairav is different from Basant. He would show me how different it is from Ahir Bhairav. He would show me how it is different in other ragas. So you can understand how it is. I could at that time. See, understanding and then performing, they are two different things. Right. I understood it. Performing, I did not do, maybe I did not do riyaz properly. Something happened and that part is not in me. But if you analyze music, he taught me how analyze ragas. Singing like Ga se Ma se Komal Re. See, 3 notes. भैरव में कैसे जाएंगे, म से रे कैसे जाएंगे. Maybe he told me 50 times. Every time he was not satisfied the way I was singing, so it happened 50 times. When he told this, he did not get tired of telling me how to sing it. That was another beauty in his teaching. The reality, the truth about his good teacher, being a good teacher. He wouldn't be tired of such a stupid student who would not learn after so many practices. And he would show me how different it is. I understood what difference was there, but I was not able to take it out. But I understood that these things are there. He never spoke prose. He would not explain how it has to be. He would display it through singing. Okay. So that display, I was used to that teaching. I understood what he's saying. I understood how it is little more, little less, whether it is brought from up or whether it is lifted from down. All I understood. Only thing was putting it into practice. My कहते हैं ना तानसेन से ज़्यादा कानसेन होना चाहिए. He made me कानसेन. I could really at that time also, I could understand what difference is between 2 of his presentations. 1 and 2. Same note, same, if you write it down, it's same note. But there is a difference in presenting it. And that's how it makes a different rag. It different in rag also if you then, one more thing. He was an experimentalist. Okay. And people say many times, many of them just said he was a revolutionary. He was not revolutionary. He was very traditional. All his ragas, all his presentations are very traditional. In traditional also, like थोड़ा सा तो आपको म्यूजिक का मालूम होता है, वादी संवादी होता है. वादी होता है जो वाद करता है, डायलॉग, आर्ग्यू. संवादी है जो साथ है. He would say there is a Vivadi sur also. दो ही नहीं है. Vivadi means yes and no both. But that Vivadi sur is all the time peeping from the door and asking him, let me come in. I'll make it beautiful. So he used to use that sur in his music, and then that thing would become a special Kumar Gandharva edition. Yes. So that Vivadi sur का भी बहुत मजा बताते थे. That sur is not allowed in the rag. But during his singing, he would present that sur in such a tricky way, tricky I would not call, such a beautiful way, that it would add 10 times the beauty of that raga. So that was his singing. Then coming back to his original, his own creations in rag.
more over 20 of them he had created, very different. So and another thing that his music carries is the मालवा के जो गीत हैं, लोकगीत, we think that they are nowhere connected with classical music. They are folklores. But music is music. 7-12 सुरों के अलावा कुछ नहीं है, कहीं नहीं है. पर उसमें जो वेरिएशंस है, तो फोकलोर में भी, फोक सिंगिंग में भी कहाँ शास्त्रीय संगीत है, उसको उन्होंने एम्प्लीफाई किया है बाय शोइंग दैट नॉट वेरी मैनी, ज़्यादा सुर नहीं लगते हैं कोई भी गाने में, छोटा सा फ्रेज है. जो फोक सिंगिंग है वो छोटे फ्रेज से एनलार्ज होता है, वो फ्रेज वही रहती है, ज़्यादा सुर नहीं रहते हैं, बट उसमें वेरिएशंस, उसी में जो कुछ करना है उसी में करना है. Maybe you sing g and m at this speed, but sometimes you just give a quick pass over the other. Sometimes you delay it, sometimes you bring it from above, sometimes you bring it from down up. So ये जो variations हैं, he pointed them out to his students and he displayed it in his singing. So that was his. Then, as I was telling you, regarding the choice of कबीर भजन्स, मच्छिंदर है, कबीर है, सूर है, मीरा है, ये तुलसी है, उन्होंने क्या नहीं गाया है. गीत वसंत भी गाया, गीत हेमंत गाया, फिर वर्षा गीत गाए, फिर लोकगीत गाए, शादी में जो गाए जाते हैं, शादी में गालियाँ गाई जाती हैं, those also he had sung in his. And see, गाली word is bad. पर कहते ना, नजर ना लगे इसलिए वो काला टीका नहीं लगाते. शादियों में इसीलिए तो गाया जाता है कि अभी दे दो जो कुछ देना है, बाद में नहीं. बट दैट इज ए प्रथा है. उस प्रथा को उन्होंने लिटरेचर के साथ जोड़ा है और म्यूजिक के साथ जोड़ा है. And he has elevated the standard of लोक गीत to higher level, such higher level that जैसे वो है, किसान होता है तो वो जो गाय है या जो बैल है, इनका क्या योगदान है खेती में, उसको एलिवेट करता हुआ भी लोकगीत है. तो इनकी तो कभी किसी ने महत्ता सुनी ही नहीं थी. Nobody had elevated that position of हाँ, उन्होंने वो किया है. और फिर गांव वाला मन से बोलता है कि तू मेरा महल बनाया है तूने, मेरे खेत को फूलों से सजाया है तूने, तो तूने तो मेरा बहुत काम कर दिया जिंदगी में. मैं तेरे लिए सींग के ऊपर चांदी के वो लगा दूंगी, पैर में तुझे सोने का वो गढ़ा दूंगी. दैट इज व्हाट द किसान्स वाइफ सिंग्स टू द बुलक. तो ये जो महत्ता बढ़ा दी, ये जो छोटी छोटी चीजों में ब्यूटी देखी, such a beautiful depiction, but ब्यूटीफुल, एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट. exactly. आप गेहूं का आटा खाते हो, कितनी वैरायटी बनाते हो, कुछ भी करते हो, कभी तो भी उस बैल की याद आती है जिसने वो पुलाव किया होगा, राइट? कभी भी उस दाने की याद आ रही होगी जो अंदर छुपाया है, जिसने पूरे खेत को हरा भरा बना दिया. Nobody. So he brought importance of those things, simple things. एक उनका लोकगीत है, मालवी लोकगीत में, सूरज उग्यो, वो जो बड़ी बड़ी पत्तियां फैलती हैं, उसके बीच में से सूरज उगता है, सुबह सुबह दिखता है. उस किरण की जो महत्ता बोलते हैं, या उस किरण की जो इम्पोर्टेंस बोलेंगे, उसको उसी गहरे भाव से, उसी गहरे सुरों में उन्होंने ढाला है. सूरज उग्यो
केवड़ा री फड़ा से, जो उस बीच में जो फट है, क्या कहते हैं, the gap. पत्तियों के बीच में से जो है, Hmm. वो जब सूरज वहां से अंदर आ रहा है, उसका तीखापन आखिरी तक आता है। सूरज तो बहुत बड़ा है, पत्तियों के थ्रू जो आ रहा है वो भी है, और वो सोना है आपके जीवन का, गोल्ड। इट्स अ वैल्यूएबल मेटल जिसके पीछे दुनिया दौड़ रही है। दूसरा गाना आता है मालवी लोकगीत का, बगड़ी बुआरा सोनो ला दियो, जल्दी जल्दी बुआरो, कलेक्ट करो, क्योंकि सोना आया है। जे का तमरे भमरे घड़ा, ओ मारी सती माता, उसका यदि तुमको भम्मर गड़ाना है, भम्मर एक ऑर्नामेंट है, तो उसको बुहारना तो पड़ेगा ना, उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो आंगन साफ करो। सी इट्स अ क्लीनलीनेस जो आजकल चल रहा है, पर उसको उस लहजे में, उस बेस पे उसको ट्रांसलेट करना फॉर ह्यूमन गुड, ये वो लोकगीतों की ब्यूटी है। एंड दैट ब्यूटी हैज बीन ब्रॉट बाय माय गुरु कुमार जी। बहुत सुंदर है। ऐसे बहुत से गीत हैं जिसमें लोकगीतों में छोटी छोटी बातों को बहुत ही बड़ा करके, बड़ा मतलब इट्स अ ह्यूज पिक्चर ऑफ देम has been created. I think his methodology of teachings has affected your own style of teaching in your career. I don't know, maybe. Do you think so? Yeah, phrase. He used to tell, हर चीज को phrases में बांटो. Make small phrases. Segments, like break in the steps. Yes. So if you put the whole thing in front of you and a very complicated idea, सामने वाला ताली तो बजा देगा पर यहाँ कुछ नहीं जाएगा. To learn it, he knew how to put it into smaller portions, connecting. And then where you would leave this phrase, there only the second place will be kept up. In music also, he always believed in teaching music with phrases. Okay. Because जब थाट एक है, जिसके राग 50 हैं, थाट तो एक ही है, द बेसिक डिजाइन इज सेम, वही पिलर्स, वही क्या कहते हैं प्लिंथ, ये सब वही है, बट द डेकोरेशन इज डिफरेंट. सो दैट मेक्स अ ब्यूटिफुल हाउस. दिस वन बेटर देन दैट, दिस वन स्टिल बेटर देन दैट, दिस इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट. ये जो वैरायटी बनती है वो रागों से बनेगी. तो छोटे छोटे फ्रेज की वो यूज्ड टू से, कैन यू नॉट विजुअलाइज, वो मारवा आ रहा है, मारवा नाम है राग का. So he used to visualize the rag. Not he used to visualize, he used to teach in this way. Ki that Vivadi Sur wants to come in. So let him come in, na? That's what the phrases he used. And then breaking the whole thing into small phrases. That was the beauty of his teaching. So Kabir's bhajan he has picked up. But Kabir, so many people are singing. So many his couplets are being sung. But the one he chose are very different. Very different. Like, उड़ जाएगा हंस अकेला. Hans is the Atman. And that ये अंडरस्टैंडिंग, आदमी को क्या मालूम नहीं है कि उसको मरना है, पर आत्मा को नहीं मरना है, उसको उड़ जाना है. तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन मरना एंड उड़ जाना, ये शायद उन्होंने समझाया नहीं मुझे. बट द मोर आई संग विथ हिम, मोर आई लर्नड विथ हिम, मोर आई हर्ड हिम, more I tried to sing after him, this opened up. This relaxed mood of death
relaxed mood of death. People are afraid, and 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 I think I have reached that place. I don't know what will happen, but I have no fear of death. No, no, no fear of death. I'm not. Today comes, now comes. It's okay. That has come from his singing, his teaching, not singing. Teachings. There is one bhajan he taught. शून्य गढ़ शहर शहर घर बस्ती अंदर शहर मतलब अंदर योर आत्मा मन बस्ती है वहां पे कितनी ज्यादा चीजें हैं मन में कौन सूता कौन जागे है लाल हमरे हम लालन के इसी में आदमी डूबा हुआ है ये मेरा ये तुम्हारा ये मेरा तन सूता ब्रह्म जागे है दिस फिलॉसफी is the one which so many saints have expressed. But when he explained it, when he sang it, अतः शून्य बोलना कैसे ऊ है वो बड़ा ऊ है long, the more rounded it is. Rounded also, ऊ मतलब एकदम कम, right? So वहां से शुरू करके आप न्य तक जाते हो शून्य. It goes like this. He explained to me, उकार मध्ये उकार जब आप बोलते हो तो बहुत लोगों का क्या उकार का आकार हो जाता आकार हो जाता उकार हो जाता कुछ भी हो जाता है क्योंकि ऊ करके गाना बहुत मुश्किल है. When you throw yourself the voice, you need a space. So ऊ तो space नहीं है, आ space है, ओ space है. But that should start. And when you go to nya, so as if you are looking like here it is a small green, small green dot. If you put towards the sun, what will happen? You have a small space to see, but you see the whole sky if you keep it like this. So this is how you should articulate. Like a projection. Wo reach, by the time you reach, it should be the Asman. You know the illustration? You know, I still get goosebumps when I remember how he taught me. ऊ का अ नहीं होना चाहिए, ऊ का ऊ ही रहना चाहिए. That's the level of depth. Depth, yes. And that's the experience he gave. No teacher, no music teacher has ever been able to search on this aspect, at least. I think like that. They present, they themselves make it like that. But to bring it to my level, to a person who has never been, मतलब जितना उन्होंने सिखाया वही मेरे पास है, मेरे पास दूसरा गाना है ही नहीं. So he would say that. Then his मन मगन हुआ जी. Explaining the word magan. Magan is a slang. Magna is a word. Then he would say why it is not magna hua ji. He said that slang is the real language. The local language is a real language because that comes from heart. ये तो आपने उसको ड्रेसअप करके पार्लर में से लाके मग्न बना दिया. But the word is मग्न because when you are मग्न जब आप होते हो तो पूरा जैसे वो लिक्विडेट हो जाते हो आप. तो लिक्विड जब रहेगा तो जोड़ाक्षर तो हो ही नहीं सकता. तो वो फील आना चाहिए आपके गाने में. मग्न हुआ जी. और लागे समाधि. कब मगन हुए आप? जब आपकी समाधि गुरु चरण में लगी है. कितना सब्लिमेशन. बहुत ही सारे सेंट्स ने यही कहा है कि जब तक आप सब छोड़ के गुरु चरण, नॉट एग्जैक्टली माई
head touches your feet, not that way. The Surrender. being, कितना सरेंडर, टोटल. अपने आप को नील करो आप. नील करने का मतलब जैसे होता है ना कि आजकल वो निकले हैं कि प्रेशर से हवा निकाल दो तो वो कपड़ा छोटा हो जाता है. वो क्या गैजेट निकला है कुछ आजकल, उसमें पड़े अमेज़न पे देख रहे हैं. यस यस यस. उतनी अपनी पूरी बीइंग को आप नील करो, तब आप एक सांस मेडिटेशन की ले सकते हो. एक सांस, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कुछ है, और वो इतना ज्यादा है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग. उतनी स्पेस काफी है वो सब नील करने के लिए. सुनील हो जाएगा मतलब वो जो पूरा आपने अपने आप को नील किया, उस इफेक्ट को नील करने के लिए एक उच्छ्वास काफी है. करेक्ट. He would explain that. See the depth of, and it's not only music, it is the being. Life. It's a being. My whole being is, I have understood through his bhajans. अब ये मेरा है कि मैंने उसको इस तरह से लिया. Maybe I'm not able to sing the way he sang, but I understand every sound that he makes, every lyric that he sings. So all those things. हम परदेसी, पंछी बाबा, we have come from somewhere. तो हम तो पंछी हैं. पंछी बाबा आनी देसरा, हम दूसरे देश के हैं. ये तो हमारा अभी आए हैं मिलने के लिए, हम जाएंगे वापस. Is it not true about a human being? You are born for a period. You मेले में आए हो जैसे कहते हैं ना, and then when you go to your home. घर तो वो है. तो ये जो फील है, ये escapist नहीं है. Those who are scientific thinking, logical and all those things, they will say this is an escapist view. I don't think it's an escapist view. Spiritual. It is spiritual, and it's the reality check that you're able to take after you really involve yourself in that music. So great. मतलब मुझे तो लगता है कि दूसरा जन्म भी मेरा मिल जाएगा तो भी मुझे ये अनुभव नहीं मिलेगा what I have got. And I think I meditated more than I learned singing. ऐसा कुछ मेरे साथ हो गया. I did not do it. It happened with me like that. Anything that he sang, he was so easy person. Ease आती है. मैंने वो जो पढ़ के सुनाया था आपको, अपने आप हो जाएगा. So he was kind of अपने आप person. कोई inhibition नहीं, कोई apprehension नहीं, कोई no fear at all. तो fear, I think I am also having no fear of anything. I'm confident about it. कुछ भी हो जाता है तो भी इधर हिलता नहीं है मेरा. यहाँ तो है ही नहीं हिलने वाली कोई चीज, पर दिमाग भी खराब नहीं होता है. So आनंद मंगल. It's so wonderful that how a person can impact your life with that much depth. Yes, he has given that. Just a single person, and that too not in your complete life, but just for some small set of months or years, whatever you call it. Yeah. Maybe I must have had, I think, 40 to 50 sittings in all my life. With him. Yes. And that has given you this. And I don't think I have given all that I had with you. I have not exchanged it all. And there is so much. Absolutely. Much. Easily, the way he called me the 4th day of his wife's death. He was 30 years and she was 32 years. इसमें वो वाइफ गई, 2 बच्चे छोड़ के गई छोटे छोटे. ही इज एन आर्टिस्ट. ही इज अलोन. कोई है ही नहीं रिश्तेदार. Still he has his head over his shoulders. In that, तो spiritually how much
risen he was. Evolved. Yes, कितना स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगे वो उस समय, एकदम. The रागदारी ऑल्सो ही टॉट मी लॉट मेनी राग, ऐसे कुछ नहीं है. उसमें भी छोटी सी फ्रेज, म्यूजिक की बहुत छोटी सी फ्रेज 15-15 मिनट चल रही है. ग म रे सा, ये भैरव का एक है. अब ग म रे सा, रे कोमल है, म शुद्ध है, ग शुद्ध है, ठीक है. 100 तरीके से गा सकते हो आप इसी फ्रेज को, more than 100. But he wanted one particular way in that rag. And he spent 15 minutes with me for teaching me this. I don't know whether I learned or not. But I underwent that experience. That was more than enough for me to, to open my eyes to the vastness of Yasatsur and the vastness of his imagination, the vastness of his creativity, the vastness of experience he was sharing with me. So, It's like for those who understand that art is everything, for them everything is art. everything is art. Yes. And आर्ट के साथ स्किल नहीं होगा तो परफॉर्म नहीं कर पाओगे. So performance is the action and art is an understanding. Yes, the feel of it. From this date, if someone asks me or someone like don't understand what art is or don't completely get the depth or vastness of art, then this is the example I'll You share can- with them that this is art. Yes, This experience which you shared with me is with Pandit Kumar Gandharva, जी. this is art. Yes. और मुझे भी मतलब आई एम नॉट श्योर एंड आई एम डेड श्योर दैट आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड इनफ फ्रॉम हिम. आई हैव नॉट, इतनी मेरे में ताकत ही नहीं है, पर अप्रिशिएट करने की ताकत है. I can gauge the area of cosmos that he filled while singing what particular note he sang. Cosmos बोल रही हूँ मैं उसको. Doesn't have bottom, doesn't have the like क्या बोलते हैं उसको, bottom and top. Yeah. Vast. And it's liquid भी नहीं है. It's airy, but it's life. It breathes. लिविंग है वो जो भी है. तो ऐसा उनका बहुत मतलब बहुत लोगों ने गाया है, बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले हैं, बट मेरी श्रद्धा जो है या बहुतों ने जो इतना उस पॉइंट को टच कर जाएंगे ना, उनके लिए कि वो मतलब ये समझ पाएंगे कि मैं क्या फील कर रही हूँ. आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग इनफ, बट आई एम फीलिंग अ लॉट. तो Okay. So, ma'am, last topic. At this age, after doing everything which you shared about in your life, at the age of 80, do you still dream or aspire of achieving something or becoming something? not becoming, but definitely trying to achieve, definitely widening my horizon. Okay, at this age too. Of course, there is a lot I have not reached anything. That's what I feel. The more I learn, the more it is just like that Tennyson's poem. The more you go, the arch चलते ही जाते The हो आप, more you know, the more you know that you don't know. you don't know. Yes, so it is like that. But ड्रीम इज दैट फर्स्टली अभी तो इस स्टेज पे आई रियली डू वांट टू स्टेबलाइज महिला अध्ययन केंद्र. वी आर अंडरगोइंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, not only funds,
but number of students, the building, all those peripheral things. And I have been trying my full, after retirement, I'm full time into this. I do physically, mentally, emotionally, spiritually, every way I am only with this work. म्यूजिक तो मैं बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ गाना, बिकॉज सम ब्रीदिंग प्रॉब्लम, बट इट इज इन मी एंड दैट गिव्स मी स्ट्रेंथ, दैट स्पिरिचुअल standing gives me a strength to do all these things. But this thing has to stabilize a little more. That is the thing that I want, and for that I need to be more stable in my health, which I am not. But I think the strong willpower, which I think I have, Absolutely. I think I'll be able to meet all my challenges with God's grace. Only you should have your head above your shoulder and feel that God is above. That's the thing I am confident about. That school, those two schools that we have, and एक और चीज थोड़ा मन में आ रही है मेरे, बहुत सालों से चल रही है, ऐसा हॉस्टल जिसमें ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम मॉडल तरीके से ग्रो कर सके. हॉस्टल मेरे घर में जो भी कुछ है अभी, I'll give away everything to that hostel, and you don't think you need something else also after this. I have lot. 80 साल में बहुत चीजें इकट्ठा हैं मेरे पास. सो हॉस्टल फंड का तो प्रॉब्लम ऐसे नहीं रहेगा टू स्टार्ट. एक्सपर्टीज ऑफ वॉलंटियर्स, बिग थिंग इज वॉलंटियरिंग इज नॉट देयर. किसी को क्यों नहीं लगता है कुछ करने के लिए, मुझे समझ में नहीं आता है. बट आई एम नॉट गेटिंग वॉलंटियर्स थ्रू योर पॉडकास्ट. आई एम जस्ट want to tell specially, and you can highlight it, that I am looking for good volunteers. They need to donate their skill, they need to donate their time, they need to donate their being for particular this thing, some corner of their heart. ये जो प्रोजेक्ट है महिला अध्ययन केंद्र का, टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन वेल, ऑल राउंड डेवलपमेंट, वो पहुंचाने में वॉलंटियर्स होना चाहिए. पेड टीचर्स विल बी डिफरेंट, उनकी एटीट्यूड ही डिफरेंट रहेगी. पेमेंट के लिए काम करते हैं. ऐसा होना चाहिए कि जो खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए काम करे. देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव इनफ एट होम, इनफ, इतना है कि वो फेंकने के लिए तैयार होते हैं, देने के लिए तैयार नहीं होते हैं. मैं तो, पैसे की बात तो अलग है, वो तो लगेगा ही लगेगा, बट आई एम ट्राइंग टू टेल कि अपना स्किल थोड़ा बांटो. वॉलंटियरिंग थ्रू योर स्किल, थ्रू योर टाइम, थ्रू योर एबिलिटी. होल हार्टेडली आ जाओ. तो ऐसे मुझे 10 बच्चे भी मिल जाते हैं तो मैं तो दुनिया पलट दूँ एकदम. दुनिया को मैं कहाँ के कहाँ पहुँचा दूँ. I'm not having a single person like with me. And exactly what kind of profile or what kind of work are you expecting from those volunteers? They should give me, कहीं कोने में, दिल के कोने में होना चाहिए कि ये मेरा काम है. जब ऐसा होगा, that calls for passion for such volunteering. पैशन यदि है आपकी तो आपको टाइम मिल जाता है. See, I worked wholeheartedly in KBS. मुझे अवार्ड भी मिला है उसका, नेशनल लेवल अवार्ड विनर हूँ मैं. तो कैसे मिल गया? ऐसे ही थोड़ी दिया मुझे कुछ. तो मैंने वहाँ भी पूरा उंडेला, उसके बाद मैं यहाँ भी कर रही हूँ. तो इट वॉज बिकॉज इट वॉज माई पैशन. वहाँ भी पैशन, यहाँ भी पैशन. तो पैशन होना बहुत ज़रूरी है. यंग बच्चों को लगता है कि हमारा टाइम, अभी तो हमारे कमाने के दिन हैं, तुम 24 घंटा तो नहीं कमा रहे ना.
कमाने में योर इमोशनल बैंकिंग शुड वर्क, योर स्किल बैंकिंग शुड वर्क, योर नॉलेज जो भी तुमको आता है, नॉलेज यानी बुक का नॉलेज नहीं कर रही हूँ, तुम अच्छे, यदि स्क्रू ड्राइवर को भी अच्छा घुमाना सिखा दो बच्चे को, वो स्किल भी तुम्हारे पास है। तो कुछ टाइम बताना पड़ेगा, वीक में आप 8 घंटे दो। कई वॉलंटियरिंग तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे मुझे ये सारा एक दरी उठाने से लेकर करोड़ों रुपए लाने तक सब मैं करती हूँ, नॉट अलोन, बट आई डू, मेरे 90% मेरा काम है। वो भी कर सकते हैं, बट वो पैशन होना बहुत जरूरी। और ये समझो कि आज जो कुछ भी मैं हूँ, मतलब बहुत प्रॉब्लम है मेरे बॉडी में, पर वो अड़ंगा नहीं है मेरे लिए। आपका भी ऐसा हो सकता है, प्रॉब्लम ना हो आपको, पर वो अनदेखा करना आ जाता है, उसी में आप नहीं रचते बसते हो, उससे बाहर भी दुनिया है। और जब आप देखते हो कि ये 15 बच्चे कुछ अच्छे हो गए हैं, तो वो जो सुकून आपको मिलता है उसका तो जवाब ही नहीं है। जब बच्चे एक्सपेक्टेंटली आपकी तरफ देखते हैं कि अपन सच में भगवान होते हैं बच्चों के, जब आप अच्छे टीचर होते हो तो ये बच्चों को थोड़ा समझना चाहिए। आजकल क्या है, फेक वॉलंटियरिंग बहुत चला है, सब चीज़ तो फेक चली है। मैं जब बोलती हूँ कि मैं एक NGO को चला रही हूँ, तो लोगों को लगता है तो पैसे खाने के लिए चला रही हैं। 99%, इफ आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग, मे बी 95, ऐसे ही हैं, दिखावे के। तो दिखावे का मत करो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर हाँ, पैसे कमा रहे होंगे शायद, पर उसमें ज़ाया ज़्यादा होता है, अपना जीवन भी ज़ाया होता है, और अपने क्षण क्यों ज़ाया करो। मैं तो एक एक क्षण की बात कर रही हूँ, एक एक सांस की बात कर रही हूँ। सो बट आई थिंक चर्निंग, फिर वही बात, लाइफ कंटिन्यूअसली चर्न्स एवरीथिंग सो दैट अमृत निकल आए बाहर। होता ना, मथनी है लाइफ में, जितना आप मथोगे उतना मक्खन बाहर आएगा। तो उसमें है, पर बिना पैशन के कोई नहीं कर सकता है, ये पैशन होना चाहिए। मैं तो टोटली अनपैशन, टोटली मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता इसके सिवा, कुछ भी नहीं। मेरा खर्चा पानी सब इसी में है चलता, और मुझे उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, सरकारी नौकरी है तो पेंशन भी मिल रही है, बढ़िया चल रहा है। एंड पीपल ऑल्सो ज्वाइन। देखो, फंड से आप वॉलंटियरिंग कर सकते हो, फिजिकली खड़े होके हमारे साथ वो कर सकते हो, अपना स्किल डोनेट करके कर सकते हो, अपनी कुछ चीज़ें हैं उसके लिए कर सकते हो। आप मेरे साथ किसी से मिलने जाना, उस समय मेरे साथ रह सकते। लोग बाग जब देखते हैं उनको लगता है ये इनका ही है, कुछ कोई है ही नहीं साथ में। साथ में चलने के लिए चाहिए। एवरीथिंग कैन नॉट बी पेड, पेड़ से नहीं होती हैं चीज़ें, सिर्फ पेड़ से नहीं होती। और हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि इतना हम पैसा दे दें कि 10 लोग साथ में आ जाएं, ऐसा नहीं है। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, दैट शुड बी द मोटो ऑफ सोसाइटी। बच्चे अच्छे होंगे तो युवा अच्छे होंगे, और युवा अच्छे होंगे तो देश तो चल पड़ा, समझ लो। And that's exactly what the motto of MAK is. MAK is, yes. वॉलंटियरिंग को मैं इस साल पिकअप करने वाली हूँ। यंग बच्चों को, अब तुम्हारे जैसे उम्र है 25 के नीचे के, भोले ही रहते हैं। आप प्यार से उनकी नजरों में नजरें डालो, आपके हो गए वो, आपके हो गए। तो इतना यदि आपके पास, मेरे पास धन है ये, कि व्हेन आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पीपल, दे आर माइन। मैं कोलाबा में जाती थी, मेरी जॉब कोलाबा में भी थी, मुंबई, ठाणे टू कोलाबा, आई यूज्ड टू टेक 2 hours टू ट्रैवल वन वे। पर मेरा एक नियम है बहुत पहले से
कि जब तक मैं कुछ विद्या दान ना कर दूं या वॉलंटियरिंग ना कर दूं, मैं रात का खाना नहीं खाती हूँ। अब वो वहाँ 2 घंटे जाने आने में, ट्रेन में तो जो होता था। आई यूज टू सॉ दैट, वो है ना सुनील दत्त की एक कोलाबा में बहुत बड़ी सोसाइटी है, स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। एक दिन उतरी मैं वहाँ, मैंने कहा दूसरी बस से निकल लूँगी। आई वेंट इनसाइड, आई टॉक टू द प्रिंसिपल एंड आई सेड कि ये मेरा इच्छा है, आई बीन डूइंग इट समवेयर एल्स बट नाउ आई एम पोस्टेड हियर, सो आई वांट टू डू इट हियर आल्सो। आई वांट टू हेल्प योर चिल्ड्रन, आई वांट टू टीच देम, आई वांट टू लाइक जो भी आप बताओ मुझे, आई हैव 1 hour विथ यू। दे थॉट कि एक बहुत ट्रबलसम क्लास है, वो क्लास मुझे दे दी उन्होंने। ट्रबलसम इन द सेंस इतना ज़्यादा स्पास्टिक वो बच्चे, एक्सट्रीम काइंड ऑफ। उनके साथ मैं 2 महीना रही बच्चों के साथ। एक बच्चा था जिसको सब समझ में आता था बट ही वॉज नॉट एबल टू आर्टिकुलेट, आवाज ही बाहर नहीं आती थी उसकी, और बहुत बड़े घर का लड़का था वो। सब डॉक्टर्स हो गए, सब हो गए। By the time it was 15 days passed with me, he was able to sing. He was not singing like I would hear it. He was singing to himself and dancing. I said, this is the first step. He is singing to himself. उसको समझ में आ रहा है वो क्या कर रहा है. I am not trained for special ability children. I am not trained. मैं तो एक human being हूँ, that's all. I took his hand. I kept his hand on my throat. And when I said something, he found that there is a vibration here. आप भी करोगे ऐसा तो vibrate होता है ना. I used to keep this. Then I used to keep his head on my hand on my head. Temperature. वो कहता टेम्परेचर. बोलता था, आवाज कहीं नहीं आती थी उसका, बट ही वॉज आर्टिकुलेटिंग समथिंग, आवाज नहीं आती थी. देन आई सेड, आई एम कीपिंग माई हैंड ऑन योर नेक. पहले बोला कि कुछ नहीं हो रहा है. मैंने कहा मेरा हो रहा है, हाँ तुम भी करो, करो कुछ भी. By and by, of his own, he found out how to vibrate inside. वो प्रिंसिपल, वो टीचर सब आके देख रहे हैं, ये क्या हो गया इसको. Then his mother came to me, said, ये क्या किया आपने, ये तो कभी भी नहीं, इसका यहाँ कुछ होता ही नहीं था. वो चिल्ला रहा है पर यहाँ कुछ नहीं हो रहा है. मैंने कहा देखो ना, प्रैक्टिकल देखो आप. इतना गले मिला वो बच्चा जब उसका यहाँ वाइब्रेट हुआ. एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोरिंग, and then he said we have spent lakhs of rupees for him, but this is a big achievement for him. And he knew all songs. फिल्म के सारे गाने आते थे उसको. वो मुंह हिलाता था, आवाज कहीं नहीं आ रही है. फिर मैंने भी वही गाने का मुंह हिलाया और उसको कहा हिला दो. सो ही वॉज, अच्छा लग रहा था उसको कि यहाँ रिएक्शन हो रहा है. सो लाइक दैट आई यूज्ड टू गो एनीवेयर. ये मेरा पैशन, तो ही तो मैं गई ना, नहीं तो कौन जाता है. कोलाबा किधर, ठाणे किधर. And I would reach in the evening 6 बजे, जो 6 बजे सुबह निकलती थी, 6 बजे रात को पहुंचती शाम को. So this is passion. पैशन नहीं होगी ना, एक्सप्लोर करने की पैशन. बहुत मजा आता है एक्सप्लोरेशन में, एक्सप्लोरिंग में. So my dream is this. और बहुत दिन तक रहेंगे तो ये कर पाएंगे. But I am confident I will be there. Because unless this is done, फिर वहाँ पे भी नुक्कड़ नाटक अगर बहुत करते हैं हमारे बच्चे. If you come, they'll show you. खूब अच्छे अच्छे गाने गाते हैं,
Because I think dramatizing is a better way of learning. कोई भी चीज है ड्रामेटाइज. हमने वो किया था सोलर सिस्टम, उसका हमने ड्रामा किया था. मतलब अर्थ है, व्हाट हैपेंस टू अर्थ, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है. तो वो सर्कल बनाया और वहाँ वहाँ वो Planets घूम रहा है. है. और हर एक प्लैनेट की बिहेवियर को डिस्प्ले किया था, उसका कॉस्ट्यूम उसको पहनाया था. सो द चिल्ड्रन अंडरस्टूड इट बेटर. सो एक्सप्लोरिंग वो तो आदमी में पहले से है, इट इज देयर. पर एक तो पेरेंट्स नहीं करने देते हैं. बच्चा जब आसमान में देखता बैठेगा तो पापा आएगा, अरे क्या आसमान में देखा है, पढ़ गणित पढ़. व्हाट इज दिस? ही इज एक्सप्लोरिंग समथिंग, ही इज एंजॉइंग समथिंग. देखने दो ना यार उसको. पेरेंट्स हमारे परेशान, पर you cannot blame them also. They are trained like that. They are in the competitive world. They want their children to be competitive. और उसको सत्यानाश कर देते हैं बच्चे बच्चों का. So it is like that. All right. Let's hope that this dream and goal you achieve, and I'll try my best to see what we can do together for in this direction. हाँ जी. And with that, let's conclude this conversation today. Thank you very How much. was your experience throughout this conversation? First thing, I believe in the world, nobody listens to you. You listen to me. This is what I got. Okay. So I enjoyed it. As a teacher, I talked too much. I did that to you also. But anyways, I don't know. I enjoyed. I don't know how you felt about it. No, it was an amazing experience. Amazing. Like filled with various types of emotions and experiences and learnings, I would say. I know. It will remain in the head. Yeah, for much long. should. यंगस्टर के दिमाग में रहेगा तो बहुत कुछ आगे हो जाएगा फिर. Right? And remember, I want children like you and other kind of people doing whatever they are doing. Somebody is running a shop, somebody is learning, somebody is still in the college, somebody is not doing anything. But enthusiasm should be there. Such children I want to have workshop with. Yes, देखो अपन करेंगे कुछ, definitely. है ना. Below 25, above 16, ये एज ग्रुप रहना चाहिए. Which I did a lot in Mumbai. बहुत किया है मैंने ये कॉलेज में. आते जाते किसी भी कॉलेज में घुस जाओ, करो. And talk to the principal or force them to ask his children, do you want to listen to this lady? They say no. 10 children come. No ma'am, we want to listen to you. 10 come, then 20 come, then 30 come, then 50 come. We would sit together, and lot of experience I have, and experience से मैं बांटना चाहूँगी, because I have a lot of it. मैंने बहुत इनवाइट किया है एक्सपीरियंसेस को. Experiences build life. और मतलब फोर्सफुली ब्रॉट इन माई लाइफ, फोर्सफुली. जो नहीं है मेरी एरिया वहाँ भी. Great. So With that, let's conclude this. It was nice having you on the show. Thank you you, for your dear. time. Thank you, dear. Thank you. I loved your show. Thank you. Thank you very much. Thank you.